Tell us something about Love You Shankar. Love You Shankar is a film. It's more क्या कहते हैं, kids friendly film. You can say it like that, and it is more about your faith. Tanisha, glamour is a word that is always attached to you. Tell us how challenging was it to play this beautiful kirdar? In my real life, I am pretty simple. और मैंने किया है एक्चुअली एक बार पहले सरकार में. I've played a completely no makeup, de-glamorized role. I've seen her in Neil and Nikki. Yeah. And my God, she was the national crush at that point in time. So, look at her, dude. It was, and I told her also while we were shooting, but beautiful co-star. Achha, is there a possibility that we can see you and Kajol together in a film or a project? अच्छा, that you will have to ask Kajol. We would love to actually. Yeah. We would really love to. Yeah. That I She'll think be like, baby, work a little more so you can come up to my level and then we'll work together. why are all your fans acting like your relatives and asking शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? ये क्वेश्चन ना शंकर भगवान को पूछते हैं. पंडित जी कोई उपाय बताएं. पंडित जी, ये मेरी शादी कभी होने वाली है पंडित जी. ऐसे एक के ऊपर हाथ रख के तो कोई भी पंडित नहीं बता सकता. Hi, this is Shreyas Talpade. Hi, this is Tanisha Mukherjee. And you're watching us on Bollywood Hungama. We are all a believer of somebody or the other. कोई ना कोई एनर्जी होती है जो हमारे आसपास होती है जिन पर हमें पूरा विश्वास है. एक ऐसी फिल्म दैट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू द एनर्जी, टू द लव, टू द इमोशन आ रही है ऑन 19th of April कॉल्ड लव यू शंकर. आज ऑन बॉलीवुड हंगामा विद मी उर्मिन आई हैव द वंडरफुल श्रेयस तळपदे एंड द फैंटास्टिक तनीषा मुखर्जी. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? Hi, Urmin. Good. नमस्कार. नमस्कार. Yes. एंड श्रेयस, पहले तो सबसे पहला सवाल, दृश्य काढली की नाही? हाउ इज योर हेल्थ? I'm a little better now, thank you. Started working also, thoda. But I take every opportunity to thank people, thank everyone, of course, God Almighty, and everyone who prayed for me, who wished me well, who blessed me, across all languages, communities, castes, everyone, so religions. Yeah. So yeah, I mean, I cannot thank everyone enough for whatever they've done for me. We wish you the best of health, Thank most you. importantly, and really all our good wishes to you. Thank you. It's so good to see the two of you all. And सबसे पहले पूछना चाहेंगे, tell us something about this project. Tell us something about Love You Shankar. So, what do you mean this? Up. I was going to say ladies Time first. starts now. But Love You Shankar is a film. It's more a क्या कहते हैं, kids friendly film. You can say it like that. And it is more about your faith. So एक लड़का है, उसके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घटती है that suddenly वो कहीं और है और उसको कुछ और visions आते हैं, let's say, and how his journey starts from there, and how his faith takes him, gets him to India, to this particular place in India, and then what happens after that. So it has got everything to do with faith and your belief in Shivji, and then how Shivji eventually, in what form Shivji helps him out in whatever his प्रॉब्लम्स आर, जो भी उसके प्रॉब्लम्स होंगे. तो शिवजी, तो हमने प्रोमो में भी देखा है कि छोटे शिवजी है, तो वो कहता है कि आप शिवजी तो भगवान तो इतने बड़े होते हैं, तो शिवजी कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान. सो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, तुम्हारी उम्र का बन जाऊंगा, और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर दूंगा. सो इट इज़ इट्स अ किड्स फिल्म, and kids will definitely enjoy it because of all the animation. And उसमें एक जो बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, वो शिवजी के जो नाग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. तो नागू वो कहता है बच्चा उनको, और वो कैसे उसके साथ बैंटर करते हैं, क्या क्या बोलते हैं. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड वेरी रिलेटेबल. नॉट ओनली किड्स बट ऑल ऑफ अस, वी कीप लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फेथ, राइट? कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमें वो शक्ति दे, वो विश्वास दे कि everything will be all right at the end of the day. So it is a film about that faith. Very well put, amazing. Tanisha,
glamour is a word that is always attached to you. We have always known you to have, glamour around you. But इस film के trailer में we've seen you in a very different attire. Tell us how challenging was it to play this beautiful किरदार? Actually, मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा challenging था. I found it rather easy because in my real life I am pretty simple. और मैंने किया है actually एक बार पहले सरकार में. I played a completely no makeup, de-glamorized role. So it was here I was playing a mom, and it was like I'm not a mom, but I was thinking of all my sisters who are moms, and I was taking a little bit, और मैं उनके जो life और वो जैसे हैं अपने बच्चों के साथ वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं अपना character develop कर रही थी. And of course Shreyas is a great co-star. He makes working with him is so easy. It feels so effortless क्योंकि हम दोस्त भी हैं, and when you work with friends and you work with somebody who you're comfortable with and makes you comfortable also on screen as an actor, so it just makes it very easy then. And the director Rajiv ji, I felt like I really felt like ये मैं पहली बार राजीव जी से नहीं मिल रही हूँ. मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने उनके साथ बहुत बार पहले काम किया है, and that's the beauty of a good director. So I think it was just the unit, the team, they made me feel so comfortable कि मुझे लगा कि I was feeling quite effortless, and they didn't want me to be anything that I wasn't already there. It was like it was very natural. But why is it that you're choosing such less roles? Why don't we see you often? I think because I've always chosen less roles. I've always felt I needed to identify and I needed to feel like this is something from inside, and I've had the luxury to do that. I will say it's a luxury. बहुत लोगों को necessity की वजह से बहुत सारी films करनी पड़ रही है. And I think it's just, I like the way I'm working. I like the space I'm in now. एक वक्त था जब भी मुझे और करना चाहिए था, अभी तभी नहीं किया, तो अभी क्यों करूँगी? अभी मैं ऐसे हूँ कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं कनेक्ट करती हूँ, अगर मैं डायरेक्टर के साथ कनेक्ट करती हूँ, I feel he's going to make a story that I want to be a part of, which was really Love You Shankar. मुझे ऐसे लगा कि ये कहानी है, एक कहानी जिसके साथ मैं अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ. Shreyas, I must say that your attire is looking fabulous, and what I have also noticed it is the इसके बारे में कुछ बताइए. The flick. Yeah, just be careful. ये घर की खेती है कि? Well, खेती है. अब किसके घर की है वो? नहीं, but thank you so much. हमारे एक बहुत प्यारे डिज़ाइनर है दीपेश नाम के, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, और एक्चुअली ही मेड इट फॉर महाशिवरात्रि. बट आई थॉट टुडेज ओकेजन वाज मच मोर एप्ट बिकॉज फिल्म शिव जी की है, तो आई थॉट जितना हम शिवमय वातावरण को बनाएं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. सो आई लाइक्ड इट. बहुत अच्छा उसने डिज़ाइन किया है. सो एंड दिस इज़ बिकॉज व्हाट द कैरेक्टर डिमांड्स. चोटी उसकी है, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो एक पंडित का है, और वो पंडित की उसमें भी चोटी है, और वो शिव जी का भक्त है, शिव जी की आराधना पूजा करता रहता है, और फिर उसके साथ क्या क्या होता है. सो आई थॉट जितना क्लोजर टू द कैरेक्टर आज रहें उतना बेटर. तो अगर आप श्रेयस पंडित जी है, तो आज अगर आप मुझे बार बार ऐसा करके देखो तो प्लीज डोंट माइंड. जी पंडित जी, जी पंडित जी, जी पंडित जी, हम आपसे आशीर्वाद भी लेंगे पंडित जी. लेकिन we're talking about Tanisha, and रोल पंडित का है, लेकिन I've seen her in Neil and Nikki. Yeah. And my God, she was the national crush at that point in time. So look at her, dude. It was, and I told her also while we were shooting. But beautiful co-star. Yeah, I mean, like when you walked in, my background में हल्ला रे चलो. I wish मुझे ऐसे walk करना चाहिए. मैं किसी को बोलूँगी, बॉय को बोलूँगी, स्पीकर के साथ रेडी रखो. जैसे मैं एंट्री करूँगी, पहले स्पीकर आना चाहिए, फिर आप आनी चाहिए. ये एंट्री चाहिए. I agree. Important. Good idea. Now, when we speak about Shreyas Tarpade, the one thing that comes to our mind is comedy, and there is this. I think you're a born comedian. You have made people laugh by just talking to them, by meeting them at different places also. So when you choose a role which is not a comedy kind of a film,
Is there a way that you prep yourself? What are the challenges that you face? How do you restrict yourself from getting into The that funny? challenges are to the director actually, you know, more than myself, because I tend to put humor into Yeah. almost everything that I do, and then it becomes very difficult for the director to just keep controlling. कि अरे नहीं नहीं सर, ये वो फिल्म नहीं है, इसमें नहीं, यहाँ नहीं. So it happens. There are certain things which happen naturally, Yeah. but I think it's also important that, you know, as an actor you keep dabbling in various kinds of कैरेक्टर्स. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. मतलब मैं भी कितनी कॉमेडी कर लूँगा, कितना हंसा लूँगा, जब तक रात नहीं है तब तक दिन का महत्व नहीं है, यू नो. सो सीरियस एक रोल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोबारा जब कॉमेडी सेट पे जाए तो यू आर फ्रेश अगेन टू डू समथिंग न्यू which people will like. But off sets, I mean off But camera, can I also was there- continue this? Yes, please. Can I answer this question? Because honestly, Shreyas, मुझे लगा कि he is superb with intensity. Like I know he has this thing of comedy, or you know, he's done a lot of comedy and he feels he puts comedy in everything. But with intensity, you actually are a very phenomenal actor in that way. Like you bring it out so well on screen, and you give it like I would never have thought that you're like just comedy, and that's the beauty of you as an actor. So Thank you. I did. I Thank love. you very I much. thought No, but it I was also like flawless. playing these different Did you give a lot of characters. credit to theatre because you come from that background? 100%. You know, there was a time कि जब मैंने इकबाल जैसी फिल्म की थी, उसके बाद में no one saw me as a comic actor or someone who can do comedy. So for me that was a challenge. Yeah. And then I did Golmaal Returns and everybody felt अरे comedy करता है. So फिर वो comedy शुरू हो गया तब से. Till I did something new again, like I did, let's say, either this one or Kaun Praveen Tambe, which was again a very intense, serious kind of. Like Door also is actually such a heartfelt film, but your character Yeah, has, yeah. and I'm sure you must have been told so many times to बस अब mimicry. हाँ, बहुत वो बहुत एक बड़ा सा हिस्सा बन गया है. Yeah. Guys, you know, since the film is about faith, I want to ask you all that what is this one thing you all do before a shot? Do you all pray? Is there a ritual that you all go through when you all are giving a shot? तो सेट पे यूजुअली गणपति बप्पा जी की पूजा होती है बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग, यू नो. एंड आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई हैव बीन प्रीटी सुपरस्टिशियस अबाउट दिस थिंग. तो स्पेशली माय प्रोडक्शन और द फिल्म दैट इफ आई डायरेक्ट, देन यू नो आई मेक इट अ पॉइंट कि सबसे पहले कुछ भी हो जाए गणपति बप्पा की पूजा होगी. एंड हमारे यूनिट में मतलब हर कोई आके पूजा करता है. तो आज तनिषा ने की, कल मैं करूँगा, परसों यू माइट डू इट, यू नो. सो एवरीबडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ द जस्ट द sanctity of the entire project that we are doing. And because ऐसा भी हुआ है कि हम लोग एक दिन शूट कर रहे थे और यू नो सनराइज शॉट लेना था. तो मतलब प्लान नहीं था कि सनराइज शॉट लेना है, बट हम लोग सब जल्दी पहुँचे एंड मेरे डीओपी ने कहा कि सर सनराइज मिल रहा है. और मैंने कहा नहीं यार, लेकिन बापा की पूजा नहीं हुई है, यू नो. एंड समहाउ उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि लेकिन हमारा काम भी तो पूजा ही है ना सर, अब मतलब क्या है, सनराइज शॉट ले लेते हैं, शॉट मिलेगा नहीं वापस. तो आई ऑल्सो गेव इन एंड आई सेड चल ठीक है, यू नो, ले रोल कर कैमरा. तो वो शॉट तो मिल गया, बट आप वॉट एवर यू कॉल इट, यू नो, उसके बाद का पूरा दिन बर्बाद हो गया. मतलब वी कुडंट शूट प्रॉपर्ली, बस का प्रॉब्लम, कैमरा का प्रॉब्लम, जीप का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम, यू नो. तो प्रॉब्ली दिस थिंग स्टक इन माई हेड एंड आई फेल्ट कि नहीं यार मुझे. तो येस, आई बिलीव इन दीज थिंग्स, यू नो, एंड दोज थिंग्स हैव वर्कड फॉर मी. So whatever works for each one, I guess it is Definitely. that thing is what we call faith, right? Absolutely. Tanisha, do you have an answer to this? So for me, like he said, Ganpati Bappa is, you know, the be all and end all, and especially for shoots. Before you start anything new, you have to give. It's about giving respect. Yeah. You know, whether it's to your mother, to your father, to the camera, to your work. It's about giving respect. वो, you know, that इज्जत देनी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को. And that's what I believe. So I feel that whatever you do, just respect. You all have had your share of, you know, fabulous films, great roles. But individually, आपके हिसाब से, which has been the most fulfilling roles of your life? Oh, wow, fulfilling. I don't know. See, being an actor, I guess, you know, just the fact that
you get to go on set and perform something, and then something works big time for people. Yeah. Sometimes things don't work, but nevertheless you felt very happy doing it. So I think just the fact that we are able to do what we love, is fulfilling enough. There are so many people जिनको वो नहीं करने मिलता जो वो चाहते हैं. पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो फिर भी लोगों को थोड़ा फ्रीडम है कि वो कोशिश करते हैं, बट पहले वो नहीं हुआ करता था. सो जस्ट टू गेट टू डू समथिंग एंड यू अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट. आपको वो चाहिए था काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं, अलग अलग जगह जाके देखने मिल रही है जो अदरवाइज नॉर्मल टूरिस्ट भी नहीं जा सकता. ऐसे जगहों पे हम जाके शूट करते हैं. सो आई थिंक इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है. वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस. और कभी कभी टूरिस्ट जाना भी नहीं चाहता है, ऐसी भी जगह पे हम जाके शूट करते हैं. We have a few of those, but I would have to say for me it's been a little different. मैंने इतने सारे roles नहीं किए हैं, but I think the most fulfilling feeling that you get is when you can really, get into full character. And I think I did that. Like if you see Neela Nikki, like it was a complete transformation for me. And if you see Sarkar, and I did them both in the same year. Yeah. Like I shot for Sarkar, and then immediately after that I shot for Neela Nikki. And it was like if you saw me in Sarkar, I was a completely different looking person. Yeah. If you saw me in Neela Nikki, I was a different looking You're person. beautiful So I in think, Sarkar, by the way. thank you. But तो मुझे लगता है कि it was for me that is fulfilling. When I'm able to completely transform myself to become the character, and I've always done that in every film that I've done, which is why I think I just look different in every film, which is why when people look at me in real life, they look like, "Arey, you're very pretty in real life. You don't look like you do on camera." Because I was like, because I'm playing a character every time, and the characters every time it's ये different. लोग के weird compliments जो है ना. ये तो मतलब अरे आप पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हाँ, या ऐसे लग रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. हैं. इतने साल से फिर स्क्रीन मैं पे बोला- इतना मर मर के नहीं, कोशिश. मैंने बोला सारे कैमरामैन को फायर करो. जिसने भी मेरे को शूट किया है उनको शूट करो. उनको शूट करो, क्योंकि they've not made me able to look this good. अच्छा, is there a possibility that we can see you and Kajol together in a film or a project? अच्छा, that you will have to ask Kajol. No, we would love to actually. Yeah. We would really love to. Yeah. That I She'll think be like, baby, work a little more so you can come up to my level and then we'll work together. Has she had a motherly effect on you because the elder Of sister? course. Yeah, definitely. And because you mentioned that you've seen your sisters to play a role like a mother like this. No, for sure. I mean, there was a time when I felt like Kajal and Ajay were my parents. Like one was my dad and one was my mom, because they used to literally treat me like that. So, it's just been, like Kajal's always been that elder sister, but she's been an elder sister who's also been a very responsible and very like do this, don't do this, follow these. So she's been like close to a mom. But why are all your fans acting like your relatives and asking शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? ये क्वेश्चन ना शंकर भगवान को पूछते हैं. पंडित जी कोई उपाय बताएं. पंडित जी, ये मेरी शादी कभी होने वाली है, पंडित जी. ऐसे एक के ऊपर हाथ रख के तो कोई भी पंडित नहीं बता सकता. पंडित जी कुछ उपाय बताएं. पंडित जी बताएंगे बाद में आपको एकांत में आपको Oh ठीक my से. God, उपाय. 7 सोमवार का कुछ व्रत वगैरह होगा तो बताओ. सब बताएंगे एकांत में बताएंगे. Hi, this is Shreyas Talpade, Hi, this is Tanisha Mukherjee. and you're watching us on Bollywood Hungama.